परफॉर्मेंस था उनका वैंकूवर लायंस के खिलाफ। रॉयल किंग्स यूएसए के कुछ टीम ऑफिशियल्स बेंच पे ऑफिशियल्स के साथ भी, and we are looking forward to the start of this first match of the second weekend. We are in Birmingham and we have got a Birmingham Kamunda now in the commentary box alongside me, Aman Kunar. Aman, I suppose welcome to Birmingham. Punjabis are very familiar with Birmingham. A lot of them have ties to Birmingham. In particular, we're not too far away from Birmingham Airport as well, so right on the inside the city, the heart of Birmingham and the Midlands, which is heavily populated with a lot of Indian connections. Absolutely, it's fair to say कि यहाँ पे अगर आप हर दूसरे इंसान से पंजाबी में बात करें या उर्दू या हिंदी में बात करें तो ज़रूर कोई जवाब आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे समझते भी हैं और यहीं के ओरिजिन से हैं बर्मिंघम निवासी. So we are going to watch this first quarter begin, 10-minute quarter, and Royal Kings USA will be on the right side of screen from where we are watching. They'll be in their grey uniforms, and up against them in their lime green, the team from Pakistan, Lahore Lions, who I suppose, as you mentioned during the pre-show, Aman, will be quite excited at the prospect of playing the final back in Lahore. Yeah, I didn't really expect that one. I think that's a really good move by World Kabaddi League to have it in Lahore, especially given the growing interest in places like Pakistan, where it's really grown over the last 4 to 5 years. Zoo Fever, the London cheerleaders as they're called, very, very excited about this. They were exciting and they were terrific in the first weekend as well, and they'll be looking forward to a good performance today as well. पहला रेड होने वाला है और लाहौर लायंस के लिए पहला रेड करने आ रहे हैं शफीक अहमद चिश्ती. बहुत बढ़िया उनका प्रदर्शन था. 21 out of 21 successful raids in the previous game. Remember, he has only 30 seconds. He gets the first touch and the first point. Well, it's 22 on 22 now. Yeah, easy. It makes it look so easy, doesn't he? Ridiculously simple. Just goes up to the outside right, gets a touch on him, and before that he's out in a flash. Jaskaran had no chance of stopping him. Yeah, and that famous finger he spoke about in the earlier part came into action there. दूसरी ओर से पूरा बग्गा पिंड बलराम सिंह उनका ऑफिशियल नेम, और उन्हें गिराया गया है और पॉइंट जाएगा लाहौर लायंस के लिए. एक्सीलेंट स्टॉपिंग, डोमिनेंट परफॉर्मेंस. Yeah, it's early days. Pura just miscalculated that one, like we say. He got caught out by surprise, but a good stop by Lahore Lions. That was terrific, wasn't it? अब दूसरी ओर से कप्तान बाबर खुद आए हैं रेड करने के लिए. बाबर गुज्जर पिछले मैच में हमने उन्हें देखा स्टॉप भी कर रहे थे. So an all-round performer. This time though, the stopper has tried to grab him, but unsuccessfully. It's another point for the Lahore Lions. They've started this like a blitz here in Birmingham. Yeah, they call him the Prince of Pakistan, and that's one of the reasons why. Unstoppable. This is a terrific team. बहुत अच्छा बैलेंस है इसमें. स्टॉपर्स भी अच्छे हैं, रेडर्स भी अच्छे हैं. उनको रोकना काफी मुश्किल होगा, लेकिन Royal Kings USA will not throw in the towel, that's for sure. They were trailing, remember, at one stage against the California Eagles. Well, that was an attempt at a dodge and a failed attempt as well. This time the first points for the Kings, and it's the captain, Gulal Ganor. Yeah, good lad. I've got full faith in him. You know, he is one of the veterans of the game. He's been playing for a number of years internationally, and he leads the team as a true captain as well. स्कोर 1-3 लाहौर लायंस के लिए. 2 पॉइंट की बढ़त, लेकिन इस बढ़त को कब तक रख पाएंगे. नाउ अप टू रेड, इट्स द स्माइलिंग असैसिन अकमल शहजाद डोगर. Very easy way about him. Has he managed this point? No. Yes, he has. In fact, the second touch coming in. तो स्टॉपर उन्हें रोकने गए थे, लेकिन उनसे पहले दूसरे स्टॉपर को टच कर लिया था. आसानी से एक पॉइंट निकाल लिया. Yeah, Doug, I like the word assassin there, because with that smiling face, it reminds me of Ole Gunnar Solskjaer. You might remember it from your commentary days from Man United. Very baby-faced, smiling, and again, he just goes there, does his business, and comes back. टच किया उन्होंने जसकरन को. उसके बाद हालांकि रोकने की कोशिश थी रब्बो की, लेकिन पॉइंट मिला है लाहौर लायंस को. इस बार बोहर सिंह वापस अपने खेमे में पहुंच गए. एक पॉइंट निकाल लिया रॉयल किंग्स यूएसए के लिए. He's been another top performer, hasn't he? Yeah, Vicky Gunnar, I think last week he's a veteran of the game, and he's playing, you know, he's really this season, I think, for Coventry. I kind of wrote him off, to be honest. I didn't think he would be
playing again after a bit of an absentee from the international scene anyway. But he's come back and he's proven his worth. गनौर का पिंड ऐसा पिंड है जिससे बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स निकले हैं और उसी सिलसिले और उसी फासले को बरकरार रखते हुए लाला उबैदुल्ला, जिनके छोटे भाई लाला सैफुल्लाह इस टीम में स्टॉपर हैं, लेकिन फिलहाल उनके बड़े भाई यहाँ पे आए हैं रेड करने। स्टॉपर ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की। He's gotten right in front of him, has just Karan. This is a tough battle on, but it is Lala who will saunter through in the end. Yeah, I think his strength really showed there. He wasn't fazed by him. He didn't move out the way. He kept his balance and made it look so easy again. आपको फिर से एक बार वो रूल याद दिला दे कि वापस जाके पॉइंट जीतने के लिए आपको पाला के बीच में से जाना पड़ेगा. As we see from the top camera, that little area there between two cushions, so that 6-meter circle, or rather that line, that has to be crossed by the raider when he goes back. Narvinder Singh इस बार raider Royal Kings USA के लिए. उनके सामने जो stopping formation है, noticeably Aman, this is a bigger field, isn't it, than what we saw at the O2 Arena? Yeah, they've left a bit of space. Obviously, last week was a bit tight, and the players have requested that, and I think it works well. You'll see a lot more the circle within the ground, and obviously the way the players will rotate the stop line. They'll have more match area to play with. I was also going through some of the stats that have been compiled for the first weekend, and on an average, each team per game managed an average of about 66 to 68 attempts. So that's quite impressive across a 40-second, or rather a 40-minute game, to get about 136 odd attempts. This time, this attempt is another successful one from Chishti. He's on fire this weekend, isn't he? Yeah, he's on fire. It's 6-3 and the 3-point lead already building up. It's early days, but I think, this stop line, Robbo really needs to fire up now. बहुत कीमती प्लेयर है इस स्टॉप लाइन में, और रब्बो ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन in the end that was a beaming smile from Shafiq Ahmed Chishti. An easy, comfortable point obtained by the Lahore Lions, working themselves into a healthy lead. Daljit comes down, gets a point for the Royal Kings USA. The Kings won't give up at any stage, that's for sure. Yeah, they can't afford to either. It's 4-6 now. Like I say, I'm still optimistic that my prediction of Kings will come through in the end. But Lahore Lions, they're obviously one of the big favourites for this. तो अब स्टॉपर्स के ऊपर प्रेशर, क्योंकि फिर से आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयर बाबर गुज्जर, उनके कप्तान, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत आला खिलाड़ी हैं. Just a quick reminder that a special thanks to our title sponsors Wave, also to our associate sponsors Sonalika Tractors, and both of them will be quite pleased with the quality of kabaddi on offer, especially from this man, Babar Gujjar. Yeah, looking at that replay now, nice flying attempt there. Again, that can always be a bit of a dangerous move as well. Let's not forget that. Player safety is also important, but I think his intentions were neat there. Yes, he's been identified as a bit of a weakness towards the right, and he's being exploited quite well. The stopper, there was Gurjita, as he's called sometimes. Balram, Buka pinned once again. Up he goes, and he is one-on-one this time with the stopper. He should make his way across. Oh, that's a terrific bit of stopping, but the point still has gone to the Kings, because he's just managed to graze that pala, hasn't he? Yeah, on initial reaction, I thought his hand was out, but obviously the umpire saw something that I didn't. But what can I say? That whole village area, you've got Dullah, you've got him, you've got Mangi. The whole area is full of world-class superstars. स्टॉपर थे वकास गुज्जर, इस बार रेडर हैं अकमल शहजाद डोगर. बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में भी उनका अच्छा प्रयास था, लेकिन this time the stopper has got through to him. This should be the first successful stop. It's Nirbhay Maud who's got him down. Time is running out, और ये पॉइंट भी मिलेगा रॉयल किंग्स यूएसए को. बेहतरीन स्टॉपिंग मॉड की. Time's up. Brilliant stop, absolutely fantastic. He is a man of few words, but he lets his actions speak for themselves. Nirbhay Maud, terrific effort from him. I mean, if you look at that, Duggar tried to go out, but kept hold of him so tight, not giving him any space to maneuver out of that move.
And that is the beauty of the circle style kabaddi. हर एक move के लिए, हर एक दांव के लिए सिर्फ एक ही point है आपके पास. तो ये एक अच्छा point ले लिया है Royal Kings USA के. And now you can see that on the scoreline it's reflected. It's a much closer contest. Gulal Ganor will walk away with another point. It's all level. You're never gonna get good lal from underneath. It's really difficult. In kabaddi, we always say that he's got thighs like Beyonce in the equivalent. There's a bit of a inner joke, but honestly, this guy is formidable. He is like a truck. Thighs like Beyonce and moves like Jagger. That's for sure. Lala Obaidullah. 7-7 is the scoreline at the LG Arena. All squared, and it's turning out to be quite a tight contest. फिर से Obaidullah कोशिश कर रहे हैं. Look at him as he's just stalking his prey, so to speak. फिर से एक और attempt. Was it a problem there? Just committing a little bit early, wasn't that the case there? Yeah, I think sometimes I would have probably taken a Jinder Rucker on there. He's been playing for Coventry he's played for a number of clubs, Coventry, Sea Temple, Wolverhampton. And for the size of that man, he doesn't perform as well as you'd think. He's not as flexible. I think he needs to improve his flexibility in his game. He's got enough power to bring down people like Lala. He just needs to use his skill. Maninder Singh, also known as Vicky Ganor, आपको बता रहे हैं कि दोनों नाम इनके होते हैं कई बार. There's also a kabaddi name जिसमें एक हिस्सा जो होता है वो उनके पिंड का नाम होता है. यहाँ पे गनौर के विक्की, बेहतरीन एक पॉइंट रॉयल किंग्स यूएसए के लिए. Yeah, 8-8. This is turning out to be a bit of not a bit of a battle, but a great battle. Fast में मुकाबले चल रहे हैं. 8 points apiece, nothing to choose between the two teams. एक और बार कैंची चला चुके हैं हरविंदर, लेकिन वहां से निकल बचे. चिश्ती keeps up his 100% record. Yeah, nice try, Robbo. But Chisti just making it look so easy. There's no expression on his face. He's like, yeah, रोक लो जिन्हें रोकना मैंने. That was quite a sight, wasn't it, in the pre-show? Him flexing his muscles. He's got some muscles to flex, and he's not really requiring them too much in this first quarter thus far. 5 मिनट का खेल हो चुका है. नरविंदर सिंह इस बार के रेडर किंग्स यूएसए के लिए 1 पॉइंट पीछे हैं लाहौर लायंस से. स्टॉपर को टच कर लिया है. मोहम्मद रमजान कुछ नहीं कर पाए, and that's another successful point for the Royal Kings USA. And like they showed in the opening weekend, they are experts at fighting back, aren't they? Yeah, like I said, this is one's going to be so difficult. I think it's going to be like this all the way to the end. And what our viewers must be thinking back home, it's not like a football game where it scores 1-0, it stays 1-0 to the 90th minute. The game changes every single raid. And what other sport can you watch where you just do not know what is going to happen next? Couldn't help but notice that you did pick out Royal Kings USA as possible champions of this match. This time though, the point has been comfortably taken by Babar Wasim. तो 1 point फिर से आगे लाहौर लायंस, लेकिन बहुत धमाकेदार शुरुआत यहाँ पे इस मैच में. 5वां मैच है ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का. आपको याद दिला दे कि हम फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, WKL tweets. Do connect with us. Do let us know what's going on, what you think of these matches, and what you would perhaps like to watch from us. We'll make sure that we consider all of that. Daljit Singh इस बार के रेडर, लेकिन उनके सामने रमजान रोकने की कोशिश, लेकिन जानी इस बार नहीं कर पाए. Yeah, like I said, you've got to watch Gianni. He is a very aggressive player, and I think normally in the UK season he would get away with these type of moves, and he's got away with it just now. But I think he's been very careful because the technical committee here will not tolerate that kind of slapping. That's exactly what Daljit points out right at the end of that particular move, that you better watch out, won't work next time. It's called the thol, but it's only legal or legible rather when you are able to do it just below the shoulder. Lala Obaidullah फिर से रेडर लाहौर लायंस के लिए 10-10 का स्कोर. इस बार स्टॉपर उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़े से आउट ऑफ बैलेंस हो गए. आसान सा पॉइंट मिल गया. फिर से रब्बो कोशिश की थी. Using his strength and power there. See how he takes him into the corner. He knows exactly where he is, pushes him out, makes it so easy for himself to get back over the line. And we've got international viewers as well. That was the case last week at London too. It's been a really good response from the United Kingdom. We saw a while ago a lovely story on Al Jazeera, which was about this particular league. Now this time around, it's a very, very close contest, but he's made his way across. And that is why Balram Singh is considered such a good raider, because for a long time he was second favourite in that tackle, but he managed to get through unscathed.
Yeah, he's got a cool temperament. And I tell you what, even if he gets stopped a couple of times, he never gives up. He's not one of these players that हौसला नहीं टूटता है गबरूदा ये चलता ही रहता है. दूसरी ओर कौन रोकेगा इन्हें? शफीक अहमद चिश्ती फिर से he's got an outstanding start this match as well. 21 out of 21 last week, and thus far I would think 3 out of 3 with that point. I tell you what, I bet he's thinking, I wish I could play a match every week, because he is looking awesome. That's been a very consistent beginning once again from Shafiq Ahmed Chishti, the beast as Aman refers to him. And that's one of my favourite players, Gurlal. I've watched this guy, since a kid, growing up, watching his game, and he played for a number of years for Punjab United Wolverhampton without fail. And I remember his journey with just as Edma, unbelievable. They used to play together. He's getting on a bit, but he's still got it, I tell you that. Well, sometimes what happens in sports is that when you get on in years, you make up for whatever little loss of mobility perhaps with loads and loads of experience. 35 years of age, but making it look so simple. देखिए किस तरीके से बड़े आसानी से अपने स्टॉपर को पीछे छोड़ के अब वापस अपने पाले में पहुंचे. एक और रेड के लिए फिर से कप्तान आए हैं बाबर. बाबर को कैची लगा दिया है. यहां पे पॉइंट आ सकता है कि नहीं रॉयल किंग्स यूएसए के लिए. Let's see what the referee points out here. Oh, he's given the point the other way. He's not happy with that at all. So that's a good stop there from Baljeet. Gurjeet rather, that was a tight one, but he's managed to give that point through to the Royal Kings USA. Take a look. Yeah, a bit of a slap on the face there as well. He was going down. He's held on to him. He's tried to pump his way out, but then he's grabbed onto his thighs and brought him down. Good manoeuvre by Jitta. I think he lost the part in arguing. If he just tried to pump his way out, he might have actually come back. थोड़ी सी गर्मा गर्मी दोनों टीम्स के बीच, और यही देखने को मिलता है when there's a team with a few Indians and a few Pakistanis. Well, the thing is, it's so tight that every point costs you the match. If they lose out now, this could be it. Well, the captain's not happy. Babar is still arguing about this. Remember that he was actually the raider there. Let's take a look once again. The catchy was absolutely all right. If you were out there in the middle as the official, what would you have called it for? I think it's fine. Personally, I think it's fine. I don't see much wrong with that. But he's saying it's a double touch of some sort. I can't see it, but Jita, for him, this is a very, very crucial tournament and all. This Wave World Kabaddi League, 27 years of age. The official there, Paranjeet Singh, just looking to pacify the Pakistan team, because really Lahore Lions should concentrate on the task at hand. It is only a 1-point gap, and we've seen that point gap is never enough in this format. Yeah, I mean, like I said, this isn't great sportsmanship in my opinion. I know they've got a valid point, but they can put the point on hold. Let's not forget that, and they can always come back to it. Like I say, it's such a tough competition out there, and I think the sports director should need to get involved in this to move the game on, which I think they're going to do now. It's just a final look once again at that particular tackle. Babar there was the raider. ये कैची लगाई जीता ने, और जीता बिल्कुल ठीक थे उस वक्त. And unless there's something which the cameras didn't pick up and which Babar was not upset or was rather upset about, there was nothing wrong with this. They're showing them the replay now, and I can't believe they're still arguing after watching that replay. I think people at home must be thinking, what is going on? The officials coming in, Shivdev Singh on screen there, excellent form of player. And we also saw there on screen match commissioner, or rather the commissioner of the Wave World Kabaddi League, Pargat Singh. Legendary performer himself as an athlete. Tera 12, or that is the lead for Royal Kings USA. Now they are not accustomed really to handling the lead. They didn't have that, remember, in their opening game against California Eagles, right up till the last quarter. So बहुत close मुकाबला हो रहा है यहाँ पे LG Arena Birmingham में.
Just about 2 minutes left in this first quarter, and the next raid coming up from Vicky Ganor. Can we expect Aman a little more physicality in this battle, as if it wasn't enough physical? ਆ ਗੇਮ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਆਣਾ I can already tell you I bet there's people back home across India thinking leave the food, let's just watch the match. Don't worry, I got a little bit of that. I think I'm improving with my Punjabi, but I'm just not there at trying it yet. I tell you what, people in South India are picking this Punjabi up fairly quickly. I can tell you that now from the response we're having. Lala Abedullah, possibly one of the last few raids which will come in from the Lahore Lions. Well, this time he's committed early, has Jiskaran. Can he keep going? Oh, Lala making it look simple. That's again the importance of the physicality that Aman talks about. Yeah, for a number of years in the UK now, he's been playing consistently well. And Abed Lala there, he's trying to bring him down and push him away to the ground. Big man, big biceps and big game as well. Narvinder Singh, दूसरी ओर से रॉयल किंग्स यूएसए के लिए 1 पॉइंट की बढ़त है, लेकिन उसे मुकम्मल करने की कोशिश यहाँ पे लाहौर लायंस की। लाला सैफुल्ला दोनों तौल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छापे नहीं लगा सके। पॉइंट मिल गया रॉयल किंग्स यूएसए को। बहुत ही बढ़िया, that's a really good point there. He kept his balance, he moved all the way through and came home. Just a 2-point lead for the Royal Kings USA as we approach pretty much going towards the last minute. Dogar, Akmal Shahzad Dogar, 20 out of 23 successful raids on the opening weekend, which was against the Vancouver Lions, who themselves weren't the most consistent in terms of their stopping prowess. In fact, they had the lowest stops as well as stopping percentage among all 8 teams. This time Dogar, has he managed to touch? Oh, that's a terrific bit of work, but he has managed to cross over to his side, hasn't he? Ah, that was close. Yeah, good attempt by Jinder Rakranwala. Very good. Namasher da Mundaya. I think he played really, he gave it all there. Slightly, just mistimed it. I think if it just been, his feet were out as well. So that wouldn't have counted, even if it pushed him through. जी हाँ बिल्कुल, दूसरे पाले में रोकने तो उसमें कामयाब रहे, लेकिन खुद दूसरे साइड चले गए थे। इस बार दलजीत सिंह, there's the first real celebration and he's got to be careful. He's got to be careful, yeah. Almost broke his wrists there. I think he needs to speak to some of the cheerleaders for advice there. Yes, not quite getting his Zoo Fever contract yet. Well, full points for an attempt. This time, will there be points for an attempt at the other side? Oh, well, Chishti was nearly stopped, but it's the impossible task to do in this Wave World Kabaddi League, and that is to make sure that Shafiq Ahmed Chishti is kept down to no points. Didn't happen this time. That's what I bet a lot of people all over Faisalabad and Lahore will be saying right now. I can already probably imagine it, posters of Chishti going across shops all over Pakistan. Possibly the last raid here. 1 point बहुत ज़रूरी दोनों teams के लिए, लेकिन वो point मिला है Lahore Lions को. So it will finish at all even. 10 minutes of this game are over, and Lahore Lions have come roaring back right with the last raid of it, and that too against Balram Singh, the star Burra Baka Pind, as he was going for his particular attempt. So it is the end of the first quarter. 10 minutes have been completed. और 10 मिनट के खेल के बाद दोनों टीम्स ने बहुत बढ़िया मुकाबला दिखाया है। 32 पॉइंट और दोनों टीम ने 16 पॉइंट मुकम्मल किए इस मैच में। So it's been really close as far as the contest is concerned. And 10 minutes of this match at the LG Arena. After that, the scoreline here at the end of first quarter: Royal Kings USA 16, Lahore Lions 16. यार तेरा स्टाइल भी पुराना है और तेरा डियो भी। डियो छोड़, शॉट लगा। बर्मिंघम के एलजी एरिना में बहुत बढ़िया पहला क्वार्टर देखने को मिला है बिटवीन द रॉयल किंग्स यूएसए एंड द लाहौर लायंस। इट्स ऑल स्क्वायर एंड जस्ट बिफोर दैट लेट्स गेट टू नो द रूल्स वंस अगेन। आपको फिर से याद दिला दे, मैं हूं दिवान सर, मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा। अंजुम, थोड़े रूल्स आप भी समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए।
Thank you, Daban. Definitely a hello to the viewers. And 4 quarters of 10 minutes each will we have here, and one raider against 4 stoppers. Each raider can last up to 30 seconds. Every raid has 1 point for either team. One-on-one combat every single raid, which means every raider, whichever goes in to do the raid, will get a point or lose a point. That means the score keeps moving. There is no stationary point at all. और ये इस गेम का एक मजा है कि इट्स ऑलवेज 1 against 1 एज सून एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाला उबैदुल्लाह आए हैं रेड करने, वो जैसे ही किसी एक स्टॉपर को एंगेज कर लेंगे या कोई स्टॉपर उनसे भिड़ने आएगा तो सिर्फ एक बनाम एक मुकाबला हो सकता है। बहुत अच्छी बात है दिबान, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप खाली गए और 30 सेकंड बिता के वापस आ गए, आप एक पॉइंट लेकर आएंगे और वो हमेशा एक आक्रामक सोच रहती है। और यही आक्रामक सोच एक पॉइंट लेके आई है लाहौर लायंस के लिए। सो देव रीएस्टैब्लिश्ड a bit of a lead. It had disappeared from their half right towards the end of the first quarter, लेकिन they have started the second quarter on a very positive note. एक पॉइंट उन्हें मिला है। दलजीत सिंह एक युवा खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी इस रॉयल किंग्स यूएसए टीम के लिए, वो कोशिश करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट अपने लिए हथियाने में। उनके सामने जो स्टॉपिंग लाइन है आप देख सकते हैं किस तरह से एक तालमेल लगा के बैठे हुए हैं। मोहसिन कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की, लेकिन बड़ी आसानी से अपने पाले में पहुंच गए। चक्रे फुट्टे, बहुत ही स्विफ्ट खिलाड़ी हैं दलजीत। मुझे याद है पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा लेट आए थे आक्रामक का रुख अपनाने के लिए, लेकिन क्योंकि इतने निम्बल फुटेड है, इतने हल्के हैं और वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से बैक पेडलिंग जो ये करते हैं वो बहुत आसान हो जाता है इनके लिए। और ना खुश रहे क्योंकि चांटा पड़ा था उनको। जी हाँ, उस रिप्ले में आपने देखा कि किस तरह से दांव पेच लगाते जरूर हैं स्टॉपर्स, लेकिन कौन रोकेगा इन्हें, कौन रोकेगा? शफीक अहमद चिश्ती एक और पॉइंट उनके लिए, 6 में से 6 आज। एब्सोल्युटली 100% रिकॉर्ड। और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे चिश्ती, और यहाँ पर भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे एक एक पॉइंट अपनी टीम के लिए कमाने की। आज के मैच में 7 में से 7 इस पॉइंट के साथ, तो बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रह रहा है। 28 consecutive raids in Wave World Kabaddi League, by far the best raider in this competition. Gulal Ganor himself has a few stripes across his jersey and he's looking to complete this one, लेकिन यहाँ पे कैची लगाने का प्रयास, लेकिन गुलाल गनौर ये पॉइंट लेके निकल गए मोहसिन नसीर के सामने से। बहुत अच्छे स्टॉपर है मोहसिन, लेकिन हल्की सी गलती करते हुए। देखिए पहला ही जब झटका लेने गए तभी पकड़ नहीं पाए, झापा लगाने की कोशिश करी, हाथ में नहीं आए, कोशिश करी कि शायद पैरों से पकड़ पाए, बट नहीं। इस बारी गनौर वापस पॉइंट एक लेके आते हुए। तो 18-18 का स्कोर चल रहा है। मैच से पहले अमन ने पिक किया था रॉयल किंग्स यूएसए को, रमोना कह रही थी कि लाहौर लायंस जीतेंगे। याद रखिए अगर स्कोर्स लेवल रहे तो दोनों को एक पॉइंट मिलेंगे और शायद हम भी रमोना और अमन को एक एक ट्रॉफी दे सकते हैं। 18-18 का स्कोर। डोगर कितनी आसानी से करते हैं, स्माइलिंग असैसिन इज चिश्ती की तरह इनका भी 100% रिकॉर्ड है। अभी तक एक भी रेड हार कर नहीं आए हैं। तीसरी रेड लगाने गए और 3 में 3, बहुत ही बढ़िया और थापी मिलती हुई सही खिलाड़ी के साथ। Just makes it look so easy because he's so swift on his feet, nimble-footed player. मनिंदर यानी विक्की कनौर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने का प्रयास था मोहम्मद रमजान का। And right at the end, a very, very aggressive push. But what mattered there was that Vicky Ganor was always aware of where he was. बड़ी आसानी से अपने पाले से वापस गए। बहुत अग्रेसिव है लाहौर लायंस की टीम। अच्छी बात है क्योंकि अगर आप स्टॉपर हैं आपको एक पॉइंट कमाना है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 4 ही स्टॉपर टीम के अंदर नेम करती है लाहौर लायंस, क्योंकि वो शायद अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं अपना डिफेंस और अपना स्टॉप लाइन। जी हाँ, क्या ऐसी टीम है जिसमें डेप्थ तो है, लेकिन हमने उनके मैनेजर से ये भी सुना था कि इस हफ्ते थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी कुछ प्लेयर्स की, तो इस वजह से शायद कुछ सब्स्टिट्यूट्स आज खिला नहीं पाए। यहाँ पे लाला उबैदुल्लाह पॉइंट लेके निकल के जाएंगे। कोशिश थी, बहुत बढ़िया कोशिश थी रब्बों की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। हरविंदर रब्बो, वेल स्ट्रैप्ड Harvinder. We can see that there's strappings all over his shoulder as well as his ankle towards his right foot. So lots and lots of prospective injury issues, but nothing of note thus far. 2019 for Lahore Lions. Narvinder rather with the next trade. बहुत ही चौकन्ने थे, जानते थे कि कहीं ना कहीं से फेक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, इसीलिए ये सेलिब्रेशन। एक और बहुमूल्य पॉइंट लेते हुए रॉयल किंग्स, बहुत ही बढ़िया रेड। That was very cleverly done, क्योंकि वकास उनके बिल्कुल उल्टे तरफ चले गए थे, तो वकास didn't know exactly पाला का लाइन किस तरफ था और उसका पूरा फायदा उठाया। निक्कू उनका निकनेम है और
एंड में वो सेलिब्रेशन बताते हुए कि जी हाँ, ये पॉइंट मैंने अपने टीम के लिए लिया है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाए। नरविंदर सिंह निकू, बढ़िया। अगली रेड के लिए चिश्ती को रोकने का प्रयास, लेकिन कोई मौका नहीं। हंसते खेलते फुदकते हुए वापस अपने पाले से वापस पहुंच जाएंगे। तो दैट वाज अनदर गुड अटेम्प्ट बाय जीता, इट मस्ट बी सेड। Absolutely brilliant attempt, but then knowing Chishti, it's very difficult to catch his legs. Of course, he's a very strong man. He's got strong looks and he knows, yes, that's me. It's very easy for me to do that. I know what I'm doing. It's very difficult to hold on to his strong man. Daljeet Singh at the other end, एक पॉइंट निकाल के ले चुके हैं, so it's going neck and neck at the moment, just carrying on from where we left off at the end of the first quarter. दूसरा क्वार्टर भी 3 मिनट का खेल लगभग हो चुका है, लेकिन 5 पॉइंट्स दोनों टीम्स के पक्ष में, so nothing in it between these two games. Match 5 of the Wave World Kabaddi League. Special thanks to Wave as well as Sonalika Tractors, and make sure that you also connect with us on Facebook, on Twitter, both social media, where Akmal Shehzad Dogar is quite a superstar. Dogar coming through once again. Dogar के सामने 4 स्टॉपर्स, राइट में फिर से गुरजीत कोशिश कर रहे हैं उनको वहां बुलाने की राइट कॉर्नर में, लेकिन यहाँ पे स्टॉपर ने जरूर उन्हें धकेल दिया है। पॉइंट लेकिन मिला है लाहौर लायंस को, बिकॉज आई सस्पेक्ट दिस वाज अ केस ऑफ द स्टॉपर क्रॉसिंग द लाइन फर्स्ट। Yes, it was again Dogar knowing very, very well how far or how close he is to the line, and then he knows very well what he is doing, and he is strong enough, he is quick enough to understand that he can push the defender out. There again 100% again for Dogar. तो आपको ये भी बता दें कि रूल्स के मुताबिक आप इस तरीके से भी पॉइंट निकाल सकते हैं बतौर रेडर, अगर आप बैकलाइन जो है उसमें से स्टॉपर को हटा दें। यहाँ पे कोशिश करेंगे वही गुरलाल गनौर, गुरलाल द अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार इन दिस टीम along with Bura Paggapind. Balram Singh, as his real name is Gurlal Singh, of course, is Gurlal Ganaur. This time he's under a little bit of pressure, लेकिन आसानी से पॉइंट लेके जाएंगे and he'll restore parity in the score line. Yes, the skipper leading the way there for Royal Kings, knowing very well that the point is crucial. Again, not been coming into the grasp for Mohammad Ramzan. Couldn't just get around him. They're definitely not happy Lahore Lions. जानते हैं कि उनकी जो strength है वो defense. Coordination बिठानी है, then you have to play together for a while. It's all about coordination, it's all about communication, and well, this time there was no problem of communication for Lala Ubaidullah. That was as simple as anything. It's always easy to go solo. That's the celebration again. 22-23 in favor of Lahore Lions. This rate's going to be very, very crucial for the Royal Kings as well. Maninder Singh. Vicky Ganaur फिर से, Maninder Singh, Vicky Ganaur. Vicky is of course his kabaddi name and Ganaur is his village. इससे अच्छा आइडिया भी मिल जाता है, अंदाजा भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह उन्हें पकड़ के रखा है जानी सनेडिया यानी मोहम्मद रमजान ने, और ये पॉइंट भी निकाल ही लेंगे लाहौर लायंस. That's a crucial point because now this opens up a 2-point lead with the next raid to come for the Lahore Lions. Yes, absolutely, and that's the strength of Lahore Lions showing right there. They're very good in their defense. They know that they have a strong stop line, and Mohammad Ramzan, the star stopper for this Lahore Lions, knows exactly, और छापा जैसी मारा, जानते हैं कि पकड़ इतनी स्ट्रांग है, जाने नहीं देंगे. क्रूशल पॉइंट मिला, लेकिन कौन रोकेगा इन्हें. शफीक अहमद चिश्ती फिर से एक और रेड करने के लिए आए हैं. He's had a terrific influence on this game thus far. 8वां रेड है उनका, इसमें से इस पहले 7 जितने भी अटेम्प्ट किए थे 7 में उन्हें कामयाबी मिली थी, और इस बार लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की हरविंदर रफो ने, लेकिन पॉइंट निकाल के ले जाएंगे शफीक अहमद चिश्ती. For a man that big, he's quite difficult to catch. रबो भी हल्के नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर चिश्ती की बात करें तो ये तो बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं. आई थिंक स्टार अट्रैक्शन है इस टूर्नामेंट वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की. और रबो ने जैसे ही देखा कि शायद उनका नजर हटी रबो से, बहुत जोर से झपटा मारा. Narvinder once again with the next raid for the Royal Kings USA. 3 पॉइंट का फासला अब निकल चुका है दोनों टीम्स के दरमियान. यहाँ पे 1 पॉइंट बहुत ही जरूरी है, और वही पॉइंट लेके वापस जा रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए जा रहे हैं नरविंदर.
यानी सिर्फ 2 पॉइंट दूर हैं अब रॉयल किंग्स की वजह से, और अब बहुत ही जरूरी है कि अगले रेड को स्टॉप करें उनके स्टॉपर्स। ये अपना काम कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं लाला सैफुल्लाह को एक वार्निंग जरूर मिलेगी, क्योंकि पैर से मारना अलाउड नहीं रहता और जरूर रेफरी उनको सुनाएंगे। डोगर पिछले मैच में 3 जरूर उनके रेड्स फेल हुए थे, और यहाँ पे कोशिश रहेगी कि उनको कैसे वैसे रोका जाए। 4 स्टॉपर उनके सामने कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बैक लाइन तक ले जाने की। आंखों का कांटेक्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है कि जब रेडर सामने से आता है तो डिफेंस सिर्फ रेडर को देख रही होती है, रेडर उन जगह देख रहा होता है कि किसको अटैक करे। Well, he took that close. Doger didn't have a lot of time in his bank, but what he did well was he swiftly moved out of the way, and once he had made a little room for himself, फिर से 3 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के बीच में आ चुका है। 26-23 in favor of the Lahore Lions. We are witnessing quite a contest here. It's the opening match of the weekend at Birmingham. The LG Arena in Birmingham is, well, I suppose quite reasonably populated with some kabaddi fans this Saturday evening. Daljit Singh, oh, he's been stopped by Babar. Babar once again pulling his weight. He started the game as a raider and now he's showing his wares as a stopper. It's another point for the Lahore Lions. The captain, fantastic, gives them a 4-point lead. बहुत ही आसान झपट्टा था ये। आई थिंक बाबर की अगर बात करें तो उन्होंने सोचा ये चींटी की तरह मसल दूंगा मैं, इतने छोटे से हैं दलजीत, और वही किया। देखिए किस तरीके से झापा मारा और इतनी जोर से जकड़ लिया, कोई मौका नहीं दिया दलजीत को निकलने का। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कुश्ती के मूव्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत कुश्ती से भी मिलता जुलता है, बल्कि सब थोड़ा बहुत खेले भी हैं, कुश्ती खेले हैं, खो खो खेले हैं। They played a little bit of rugby and tag as well, especially the boys who've grown up in the United Kingdom or played here. Lala Ubaidullah will come away with a point. फिर से कैंची लगाना चाहते थे, लेकिन आज कहना पड़ेगा हरविंदर रबौत थोड़े से ऑफ कलर हैं, उस लय में नहीं दिखाई दे रहे जो पिछले हफ्ते थे। जी हाँ, उनका ग्रिपिंग भी बहुत बढ़िया नहीं मिल पा रही, और अगर यहाँ देखें तो अगर आप रेडर्स की बात करें तो टारगेट भी कहीं ना कहीं रबों कर रहे हैं, हल्के से थोड़े शोल्डर पे इंजरी है, पैरों पे इंजरी है, बट आज फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। So it's a 5-point gap. How crucial could this be? 5 पॉइंट मिल चुके हैं, और खास तौर पे लाहौर लायंस जानते हैं कि जो हल्का सा ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होता है उसको अटैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो यहाँ लाहौर लायंस के लिए 100% मार्क्स, उन्होंने ऑपोजिशन को पूरा ढंग से रीड किया है। यहाँ पे 1 पॉइंट जरूर निकाल चुके हैं अपने टीम के लिए गुरलाल, लेकिन अभी भी 4 पॉइंट का फासला। In that sense, it's a bit like hunting, isn't it? Because you're only as strong as the weakest in your pack. So that's what the stopping line has to believe. Absolutely, they have to believe that what they are playing to the strength, they are a strong opposition to that, and well, you're as strong as your weakest link in the chain, so even a chain can become weak, and that's what this Wave World Kabaddi League is showing. शफीक अहमद चिश्ती एक बार फिर रेड पर आए हैं, उन्हें इस बार रोकने की कोशिश जरूर थी, लेकिन आसानी से खुद को निकाला, और देखिए कैसे हंसते खेलते दूसरी ओर जा रहे हैं, जायंट स्क्रीन पे भी खुद को थोड़ा सा निहारते हुए। That's what they're all fighting for, the beautiful crystal studded trophy of the Wave World Kabaddi League. And this man Chishti, he is a star attraction from the Lahore Lions. He knows exactly how the world functions. He knows exactly how to get those points, and he's been a 100% record in this Wave World Kabaddi League. Man of the match in the previous match, this one again heading for another one. मनिंदर सिंह यानी विक्की गनौर फिर से अपनी टीम के लिए, आपको फिर से याद दिला दे कि सब प्लेयर के आप कई बार नाम सुनेंगे, एक का नाम आपको दिखेगा, दूसरा नाम सुनाई देगा, क्योंकि एक निकनेम भी होता है, गांव का नाम, पिंड का नाम भी आता है। यहाँ पे एक बढ़िया झापा लगाने का प्रयास, लेकिन निकलने की कोशिश, लाला सैफुल्लाह शायद नहीं रोक पाएंगे, पॉइंट लेके निकल जाएंगे। एक बार फिर से विक्की गनौर, और very very important point for the Royal Kings, which brings them back to just within 4 points. The Zoo Fever enjoying themselves, as are we. Absolutely, there are wrestling and a kho-kho and a kabaddi matches happening on the ground, and an acrobats is happening here. Everything for the spectators who are watching this live in this stadium in Birmingham. The complete package, which could also describe somebody like Lala Ubaidullah. He's strong, he's fast, and he's very very experienced. आपको याद दिला दे कि काफ़ी सारे इस लाहौर लायंस टीम के प्लेयर ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप कबड्डी उसमें भी खेलते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम की ओर से। यहाँ पे देखिए किस तरह से स्टॉपर और रेडर के बीच में एक मुकाबला चलता रहता है। पकड़ लिया है, कोशिश करे, लेकिन वापस अपने पाले में पहुंच ही गए। Excellent work from Lala Ubaidullah, but full credit as well to that game attempt from the stopping man Tajinder.
बहुत बढ़िया, तेजिंदर की बहुत अच्छी कोशिश। और इस चीज के अंदर हमें ये बहुत आसानी से दिखता है कि अगर आप स्टॉपर इम्बैलेंस हुए तो आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा रेडर को रोकने का। नरविंदर सिंह फिर से, आज हमने बोहर सिंह को अब तक बिल्कुल नहीं देखा है, सो मे बी he'll come on at some stage and try and change things around. This time around, well, the point has been given to Lahore Lions and he's not too happy about it, Narvinder. He's not, he's complaining that Mohsin caught him wrongly and that he's already got a touch, and he's definitely not allowed Mohsin to come and double touch him again. He's definitely not happy. And he gave up the raid much before the time limit happened. Time out मांगते हुए Royal Kings USA की टीम। जी हाँ, और इस टाइम आउट की ज़रूरत भी थी कह सकते हैं, क्योंकि दिस सेकंड क्वार्टर हैज़ बीन ऑल लाहौर लायंस, हैजंट इट अंजुम? सो जस्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू जस्ट ब्रेक द मोमेंटम एंड try and come back into the match. I think there's also just a little bit of an issue with the match. They're just trying to sort out that there's a little gap which they want to make sure that that's taken care of. Excellent turnout, Anjum, and I would say it's already better than London's O2 Arena. Oh yes, absolutely, and that's definitely going to show that the way World Kabaddi League is actually caught on and it's growing and it's increasing. Let's not forget that Birmingham has got a very good, strong Kabaddi following population as well, and people from not only Birmingham have come down. They've heard that people of London have driven down to watch this as well. पिछले रेड में जैसे हमने देखा था, नरविंदर, उनके शर्ट का नाम निक्कू, उनको कैसे गिराया गया, लेकिन नाखुश थे क्योंकि पहला टैकल उनके मुताबिक अनफेयर था, and that is why he gave up the ghost quite early. And look at that, the expression say it all. And in spite of all of that, the Lahore Lions stopper stuck to his task. उनको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है कि कहीं से निकल ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और जब तक रेफरी मैच देख रहे हैं, वो मैदान पे हैं और उनके हाथ में सीटी है, जब तक रोकते नहीं है मैच को, आपको रुकने का कोई मतलब नहीं है। आप एक खिलाड़ी हैं, आप चलते रहिए, देखते रहिए, और अंपायर हो, रेफरी हो, जो भी हो, वो अपने आप बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। भाई उनका काम है, उनको मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इमरान साहब की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी टीम के साथ बहुत खुश हैं क्योंकि लाहौर लायंस 31 से 25 पॉइंट पे लीड कर रही है। It's a high-octane sport, and there's lots and lots of energy visible at the LG Arena, not least of all from the Zoo Fever, the London cheerleaders who also entertained us a lot with their excellent performances at the O2 Arena. Just dropping a little bit out of frame there, but well, they're doing a fantastic job. Well done, girls. तो लाहौर लायंस जो कि हाफ टाइम या कह सकते हैं पहले क्वार्टर के एंड तक 16 तक थी, उसके बाद 15 पॉइंट जीत चुके हैं अंजुम, और सिर्फ 9 पॉइंट मिले हैं रॉयल किंग्स यूएसए को। तो 6 पॉइंट गैप which could be quite crucial unless Royal Kings USA can come back in the next 2 minutes or so of this half itself. बट मुझे लगता है रॉयल किंग्स यूएसए के पास जरूर मौका है। पिछली बारी भी जब वो कैलिफोर्निया ईगल्स के विरुद्ध मैच खेल रहे थे तो काफी 6 या 8 पॉइंट से पिछड़ गए थे, खास तौर पे थर्ड क्वार्टर के अंदर। लेकिन चौथे क्वार्टर में हमने देखा कि एकदम से उन्होंने लीड कवर ही नहीं करी, ले भी ली। सो कहीं ना कहीं रॉयल किंग्स जानते हैं कि अगर वो पीछे भी हैं, पॉइंट ये नहीं है कि आप पीछे हैं, पॉइंट ये है कि कितने पॉइंट्स पीछे हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कितनी जल्दी उसको मेकअप कर सकते हैं। और रॉयल किंग्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप इनके रेडर्स की बात करें, भूरा बक्का की बात करें, गुरलाल गनौर जो कैप्टन है उनकी बात करें, तो एक्सपीरियंस है इनके पास। हर जगह लीग खेल चुके हैं, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएसए अंदर लीग खेल चुके हैं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी का यही फायदा होता है। Well, here comes the smiling assassin once again, Akmal Shehzad Dogar. मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पे टिकी रहती है, कुछ भी हो रहा हो, और ये एक बहुत अच्छी खासियत है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। It helps you retain your perspective. It makes you remember that you're just playing a sport at the end of the day. डोगर के सामने 4 स्टॉपर, एक को टच करके बड़ी आसानी से अपने पाले में उछलते कूदते वापस आएंगे। But there's one smiling assassin which definitely the whole world would be known. That's Chris Gayle. He's definitely an assassin. You know, you don't want a smiling assassin who's just murdering you and butchering you all the way around. But Dogar and I think Chishti, both of them are in the same mold at what Chris Gayle is. Absolutely, the way that the batsman smashes the ball out of the
cricket ground. Similarly, some of these Kabaddi Raiders in particular make it look so simple. Daljit Singh यहाँ पे उनके लिए ज़्यादा आसानी नहीं, क्योंकि मोहम्मद रमज़ान उनके ऊपर टूट पड़े हैं. प्रयास है कि उनको लाइन के पीछे भेज दिया जाए. पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ पे लाहौर लायंस को. And oh, that's an acrobatic one. That's a full 10 on 10 thus far. That's a half somersault. But then again, मोहम्मद रमजान इस टीम के बेहतरीन स्टॉपर हैं. लाहौर लायंस की अगर बात करें तो मोहम्मद रमजान स्टॉपर्स के खेल में सबसे पहले नंबर पर आएंगे और सबसे बढ़िया इस फील्ड के इस स्ट्रॉन्ग लाहौर लायंस के स्टॉपर नजर आते हैं. और ये भी साफ ही चढ़ गए, कोई मौका ही नहीं दिया कि दलजीत शायद कोशिश भी करता है निकलने की. अंजुम, जिस तरह से रेडर्स को हमने कंपेयर किया कुछ बैट्समैन के साथ क्रिकेट की दुनिया से, तो similarly I would say that stoppers sometimes are a little bit like defenders in football, also in some of their tactics, a little bit agricultural at times, but very effective. Everybody would remember Claudio Gentile, the butcher of Bilbao as he was called, and the way that he harried all the footballers in the 80s. But this man, he is absolutely unstoppable at the other end. Well, Shafiq Ahmed Chishti, I suppose at the current moment the Indian cricket team could do with somebody as consistent as him as a batsman, because he just doesn't fail. He always gets in and gets a point. No comments to that. But yet again, a successful raider is a successful raider. Well, on that topic, of course, congratulations to the Indian women's team. Terrific victory over England in the women's test match, and my co-commentator has been keeping an eagle eye. She's been watching, she's been following it, and no doubt बहुत खुश हैं वो. इस बार खुशी किसे मिलेगी? रॉयल किंग्स यूएसए के लिए अटैक करने आए हैं और ये रेड कंप्लीट भी कर लेंगे. हर पॉइंट यहाँ पे कीमती है इस टीम के लिए. गुरलाल गनौर एक पॉइंट लेके जाते हुए. और गुजर जो लाहौर लायंस के स्टॉपर है, उनमें एक खास बात है कि जब वो खिलाड़ी को पकड़ नहीं सकते तो वो धक्का मारने की जरूर कोशिश करते हैं कि पाले के बाहर चले जाएं रेडर और पॉइंट लाहौर को मिल जाए. सो ये टैक्टिक मैंने हमेशा देखी है कि गुजर जो है खास तौर पे वही अपनाते हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन स्विफ्ट जरूर है. और क्रिकेट की बात कर रहे थे तो वह ऑलराउंडर भी है, क्योंकि रेड भी करते हमने देखा है, हमने स्टॉप भी करते हुए देखा, और दोनों यहाँ पे इस मैच में वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के 5वें मैच में दोनों मुकम्मल कर चुके हैं अपनी टीम के लिए. दूसरी ओर से बड़ी आसानी से एक पॉइंट लेके निकल रहे हैं लाला उबैदुल्ला. बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं. And Lahore Lions once again are looking at their best. The first quarter didn't go that well, Anjum, but now they look like they're turned on 100%. Absolutely. Lahore is one of the strong teams in this competition. We are still awaiting a lot of international players who will be finishing their US League and Canadian League and joining this Wave World Kabaddi League. But as we speak, Lahore Lions is doing really well. अगली रेड के लिए विकी गनौर, मनिंदर सिंह उनके सामने जरूर आ गए हैं. स्टॉपर कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने का. मोहसिन आप गठन और उनके डील डॉल से देख सकते हैं कि he is built quite perfectly for a stopper, and he stopped this one magnificently. That's another point for the Lahore Lions. They are now 10 points adrift of Royal Kings USA. Lots and lots of congratulations going all around as we complete the second quarter and we get into halftime with Lahore Lions. Excellent performance from them. 10 पॉइंट का फासला आ चुका है. इस दूसरे क्वार्टर में लाहौर लायंस की टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाई है. 16 का पॉइंट था या स्कोर था पहले क्वार्टर के बाद, लेकिन दूसरे क्वार्टर में पूरी तरह से डोमिनेंट परफॉर्मेंस है लाहौर की टीम का. इसी वजह से द स्कोर एट द एंड ऑफ 2 quarters, हाफ टाइम स्कोर लाइन हियर एट द एसजी अरीना. रॉयल किंग्स यूएसए 26, लाहौर लायंस 36.